invite Mr. Sarmad Ali, Secretary General, All Pakistan Newspaper Society. He has belonged to the media profession since last 35 years. He has a vast experience in marketing, advertising, and media management. Presently, he is Managing Director of Geo and Jung Media Group, which is Pakistan's largest media conglomerate having presence in print, broadcast, and digital space. He has remained the President of All Pakistan Newspaper Society and the General Secretary of All Newspaper Society. The Newspaper Society is the representative organization society of Pakistan, and it is one of the oldest newspaper society. In 2013, the President of Pakistan awarded him with the Sitare-e-Imtiaz, Pakistan's third highest civil award. The topic of his speech is Conceptualizing the Belt and Road Initiative through the Pakistani lens. Sir. Bismillahirrahmanirrahim. Good afternoon. Good evening, actually. Assalamu alaikum and ni hao. मेरे एक दोस्त थे, अल्लाह मग़फ़िरत करे, वो अंग्रेज़ी अखबार से उनका ताल्लुक़ था, तो वो हमेशा कहा करते थे कि since I work for an English newspaper, I will talk in English. तो जहाँ भी प्रेजेंटेशंस करते थे या तकरीर वकरीर करनी होती थी वो अंग्रेज़ी में कर रहे होते थे. मेरा प्रॉब्लम ये है कि I work for an organization that owns an English newspaper as well as an Urdu newspaper. So I have to be hybrid in that sense कि उर्दू अंग्रेज़ी को मिक्स करके बात करूँ. सबसे पहले तो डिपार्टमेंट ऑफ आर्ट्स एंड मीडिया फाउंडेशन यूनिवर्सिटी का शुक्रिया जिन्होंने मुझे आज यहाँ बुलाया और आप लोगों से इंटरेक्ट करने का मौका दिया. आई ऑलवेज एंजॉय इंटरेक्टिंग और टॉकिंग टू अ यंगर ऑडियंस with young minds and hearts because it helps me keep my heart and my mind even younger. तो इसलिए मतलब जितना आदमी इंटरेक्ट करे आप लोगों के साथ उतना हम अपने आप को थोड़ा सा नौजवान तो नहीं जवान शायद फील करते रहते हैं. ऑल पाकिस्तान न्यूज़पेपर सोसाइटी को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ. मैं काम जैसे मैंने कहा कि आई वर्क फॉर द यंग एंड जियो मीडिया ग्रुप बट आई एम ऑल्सो द सेक्रेटरी जनरल एंड फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ द ऑल पाकिस्तान न्यूज़पेपर सोसाइटी. ऑल पाकिस्तान न्यूज़पेपर सोसाइटी इज़ a representative body of the newspaper industry. The society was formed in 1950 and since then has actually expanded its influence and scope. We have come a long way from where we started. We have been at the vanguard of struggle for press freedom. We have been at the vanguard of struggle for commercial and financial rights of the newspapers because we strongly believe that actually covers issues like circulation, advertising, government lobbying, and so on and so forth. Newsprint, the biggest issue, taxation. कागज़ की कीमतें आसमान पर जा रही हैं. आप देख रहे हैं अखबार सो करते जा रहे हैं क्योंकि कागज़ खरीदने की और डॉलर की सकत में हमारे पैसे नहीं रहे. So, because these issues, these financial and these commercial interests, जो issues हैं, उनको हम represent करते हैं, effectively represent करते हैं, lobbying करते हैं, इसलिए कि we strongly believe that it is with financial freedom of media that actual press freedom comes. If there is no financial freedom and financial independence for the media industry, you should not expect any press freedom in true sense. Because then various interests start controlling media, as is happening. वो कहते हैं बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं वो हमारे पड़ोसी मुल्क का जो मीडिया है उसको कंट्रोल करते हैं और वो नैरेटिव बिल्डिंग हो रही है. आजकल के दौर में जो सबसे दुनिया की मोस्ट एक्सपेंसिव रियल एस्टेट है वो 6 inches by 6 inches है, and it is up here. This 6 inches and 6 by 6 inches is the most expensive real estate in the world. This is where narratives are made and counter narratives are made. This is where that we need to fight for what we believe in or what we think is right or what is being ये एक किस्म की वो चाय नहीं पत्ती डालते छन्नी होती है. So this is like a strainer. It's like a strainer. उसके अंदर सब कुछ जा रहा है, जो निकल जाता है वो निकल जाता है, जो ऊपर रह जाता है वो रह जाता है. तो हम उसके अपने हिसाब से अपनी perceptions build करते हैं या demolish करते हैं अपने perceptions. तो इसी तरीके से यहाँ पे मेरे ख्याल में जो APNS
की जो मीडिया ऑर्गेनाइजेशन है या मैं जो जंग ग्रुप को रिप्रेजेंट करता हूँ, तो हमारे जैसे इदारे या एसोसिएशंस जो है ना, उनकी इम्पोर्टेंस आ जाती है, क्योंकि दिस इज़ वेयर द मीडिया प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल. प्रेसिडेंट शी की 5 कनेक्टिविटीज़ हैं जो BRI से रिलेटेड. उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट कनेक्टिविटी है मेरे नज़दीक, इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, ट्रेड भी है, अनहिंडर्ड ट्रेड है, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट मैं समझता हूँ पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी है. और पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी उस वक्त तक मुकम्मल नहीं होती, उस वक्त तक कंप्लीट नहीं होती जब तक आप इफेक्टिवली नैरेटिव बिल्डिंग नहीं कर पाते. आजकल के दौर में जहाँ पे हम देखते हैं कि मैं ये समझता हूँ कि आई थिंक देयर इज़ अ वर्ल्ड और देयर इज़ अ BRI beyond CNNs and BBCs of the world. Our problem is that we look at everything, whether it is introvert, internally हम अपने ऊपर देख रहे हैं, या हम अपनी कंडीशंस को देखते, इकोनॉमिक कंडीशंस को देखते हैं, या हम अपने रिलेशनशिप्स को अपने नेबर्स के साथ देखते हैं, या हम BRI और CPAC को देखते हैं, तो उसको भी हम बेसिकली हम एक ऐनक पहन लेते हैं जो शायद CNN और BBC जैसे इदारों की एक ऐनक है, जिसको हम पहन लेते हैं और उसी के हिसाब से हम अपनी परसेप्शन बिल्डिंग करते हैं, अपने जहन के ऊपर हम वो ले आते हैं, जबकि हमें उसको देखना चाहिए अपनी लेंस से, अपनी आंखों से उसको देखना चाहिए, और ये देखना चाहिए कि क्या उसमें हकीकत है क्या नहीं है. इसलिए जो मीडिया लिंकेजेस हैं बिटवीन द चाइनीज़ मीडिया एंड द पाकिस्तानी मीडिया बिकम मोर इम्पॉर्टेंट. मैं अगर अपनी एग्जांपल लूँ जंग ग्रुप की, तो भी हमारी लिंकेजेस हैं, चाइना दिल्ली के साथ हमारी लिंकेज है, हमारी गवर्नमेंट दिल्ली के साथ है, शिन्हुआ जो न्यूज़ एजेंसी है उसके साथ है, पीपल्स दिल्ली के साथ है. और इसके साथ साथ मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग द न्यूज़ अखबार पढ़ते हैं. अगर आप में से कोई कितने लोग पढ़ते अखबार, कितने लोग पढ़ते हैं पहले तो ये बताएं. इसलिए देखना 4 या 5 हाथ उठें. इसलिए डिसइंफॉर्मेशन, मिसइंफॉर्मेशन और फेक न्यूज़ जो है ना, वो हमारे दिमागों में सर्कुलेट करती है. वही उससे हम हर चीज़ को देखते हैं, वो झूठ निकलता है उसको हम सच बना लेते हैं, और वही हम BRI के साथ कर रहे हैं, वही हम CPAC के साथ कर रहे हैं, वही हम अपने पूरे माहौल के साथ कर रहे हैं. तो मसला ये है कि अखबार और ट्रेडिशनल मीडिया जो है ना, वो कम से कम झूठ नहीं फैलाता, इसलिए कि उसके पास 24 घंटे या 12 घंटे या 8 घंटे का एक स्पैन होता है जिसके अंदर वो न्यूज़ को चेक करता है, काउंटर चेक करता है, रीचेक करता है, और फिर उसको वो आप तक पहुंचाता है. जबकि जो सोशल मीडिया है जहाँ से फेक न्यूज़ क्रिएट होती है, वो तो ठक ठक की गेम है कि जैसे ही आया आपने ट्वीट की, जैसे ही आया आपने कोई वीडियो अपलोड कर दिया, या आपने कोई अपनी व्लॉग कर दी, और आप उसी में परसेप्शन हो गया. मैं कहीं से कहीं निकल जाता हूँ, मेरा ये प्रॉब्लम है. अंग्रेज़ी अखबार, जो हमारा अंग्रेज़ी अखबार है द न्यूज़, उसके अंदर हफ्ते में एक दिन, बुध के दिन, चाइनीज़ लैंग्वेज में एक सफ़ा छपता है. वो इसलिए छपता है कि हम समझते हैं कि यहाँ पे जो लोग, कुछ लोग शायद पाकिस्तानी लोग हैं, पाकिस्तानी शायद चाइनीज़ अगर पढ़ना चाहें, जो कोई सीख रहे हैं कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में, मे बी उनके लिए अपॉर्चुनिटी होगी ख़बरों की नज़र से देखने की, या जो चाइनीज़ दोस्त हमारे पाकिस्तान में रह रहे हैं उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी होगी कि वो अपनी लैंग्वेज के साथ एक कनेक्टिविटी क्रिएट कर सकें. तो इस किस्म की अपॉर्चुनिटीज़ हैं मीडिया के साथ. जो मीडिया, अभी मैं बात कर रहा था मैडम तबस्सुम से, पाकिस्तानी, उनका उर्दू का नाम जो है वो तबस्सुम है, तो उनसे मैं बात कर रहा था, तो शी सेड दैट शी वुड लाइक टू कोऑपरेट विद जियो न्यूज़ फॉर वेरियस television related opportunities that there could be between them and us. So, you know, these are kind of things that need to be done. We need to go beyond just being led by or driven by social media, 1. 2, by the biases of the West. They have their own biases. They have tried, and they failed to come up with an alternate to Belt and Road Initiative. Belt and Road Initiative is actually covers something like 30,000 projects across 155 countries, and represents an investment of something like $1 trillion plus. And this is the largest ever infrastructural investment in the history of mankind.
So the West doesn't have that kind of an alternate to BRI. So वो क्या करें? क्योंकि वो BRI successful हो रहा है तो उसके लिए क्या किया जाए? So they don't have an alternate. They've tried talking about जो G8 हुआ था. They tried to talk about something that they wanted to launch, which is a non-starter to start with. So how to counter BRI? So how to counter BRI is that it's a debt trap. That's the first thing that comes to the mind of people who they want to, the minds that they want to capture. It's a debt trap. It is not a debt trap. You need to understand इसके मुख्तलिफ dynamics क्या हैं. वो श्रीलंका की example दी गोंदल साहब ने, वो हमारे सामने है, ठीक है. तो वो उनका जो एक narrative है, वो ये है कि वेस्ट का जो narrative है मीडिया का, वो ये है कि ये एक debt trap है, ये इन economies को कर्जों में जकड़ देगा, जबकि it is not that. So this is the kind of narrative building that is going on around us. So we need to understand that and actually be able to discern between what is misinformation, what is disinformation, and what is actually even worse, fake news. So unless we are able to do that, and unless we will not be able to do it, we will not be able to do much. So इस लड़ाई में ये जो change by change की जो real estate है और जो battleground है, इसके लिए ज़रूरी है कि हम एक discerning opinion रखें, एक open mind रखें और एक देखें कि क्या हो रहा है, what is actually going on and how do we counter that. CPAC जो है obviously उसके बारे में भी बातें हुई. अभी someone asked a question कि CPAC slow है या CPAC has been halted. CPAC is as fast or as slow as it has been in the last 10 years. There are different aspects of BRI, there are different phases of BRI with CPAC, and it goes according to those phases. It is not that with change of government the priorities will change. No, because it is not. It is something on which all political parties and the military establishment, as well as all major corporates of Pakistan, are one. That CPAC has to be completely and successfully executed, all projects. Obviously, China का अपना इंटरेस्ट है कि उनको एक रूट मिल रहा है, उनको एक कॉरिडोर मिल रहा है जो उनको ओपनिंग प्रोवाइड कर रहा है वेस्टर्न चाइना को, वेस्टर्न रीजन जो चाइना के हैं उनको एक ओपनिंग प्रोवाइड कर रहा है इनटू द अरेबियन सी थ्रू द कराची एयरपोर्ट एंड थ्रू द मोर इम्पोर्टेंटली द गवादर एयरपोर्ट. तो उसमें वो इन्वेस्टमेंट्स ऑब्वियसली आपको उस तरीके से नजर आती हैं. अगर आप देखें इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ट्रांसपोर्ट सेक्टर के अंदर आप देखें इन्वेस्टमेंट्स हैं, रोड्स में इन्वेस्टमेंट्स हैं. द काराकोरम हाईवे इज द लिंचपिन. इसमें एयरपोर्ट्स पे हैं, गवादर एयरपोर्ट, गवादर पोर्ट आपके सामने है. जो आपका रोड्स, जो आपके जितने भी मोटरवेज और रोड्स बन रहे हैं टिल कराची, अब बीच में सक्कर और मुल्तान का एक फेज़ रह गया है जिसको कंप्लीट किया जा रहा है. और उसके साथ साथ ये जो और एस्पेक्ट्स हैं, जैसे मिसाल के तौर पे जो इन्वेस्टमेंट आई है पावर सेक्टर में, आई थिंक दैट इज़ इंटेंस, इट इज़ ह्यूज, ह्यूमंगस. उसने थोड़ा सा हमारी जो ज़िंदगियों का एक रूटीन है, लोड शेडिंग एंड पावर शॉर्टेजेस, उसको कम करना शुरू किया. इन फ्यूचर थ्रू विंड फार्म्स एंड थ्रू सोलर पार्क्स एंड थर्मल एंड हाइडल पावर विल एक्चुअली उसको मज़ीद कम से कम करती जाएगी. एंड इट विल मेक द क्वालिटी ऑफ द लाइफ ऑफ आवर पीपल मच बेटर देन इट इज़. सो बेसिकली ये अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो हमें अपने सामने रखनी है और मीडिया के ज़रिए अपने सामने रखनी है. वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट एज पाकिस्तान opened the doors of the world to China in the 70s. China today is opening the doors of the world and humongous opportunities for Pakistan. We need to understand that and take advantage of those opportunities.
We need to be part of the community of shared future. Or we need to highlight the fruits of CPAC to the people, because actually at the end of the day, they are the real stakeholders. और चाइना पाकिस्तान की दोस्ती वो तो कहा जाता है हिमालय से ऊपर समुद्रों से गहरी शहद से मीठी है और जितनी ये स्ट्रॉन्ग है प्रूव हुई है अभी जिस तरीके से कि जो हमारी फाइनेंशियल इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी थी उसमें द वे चाइना स्टूड बाय अस दैट इट प्रूव्स वो जो एक मैंने कहा था चाइना में जाके वो कहते हैं आयरन ब्रदर एक्चुअली दैट इज व्हाट इट इज आवर रिलेशनशिप इज दैट ऑफ आयरन ब्रदरहुड बिटवीन टू कंट्रीज एंड दैट cannot be changed. So that is why I think the important thing here would be that media needs to highlight the positive role that CPAC is playing in changing the lives of our common men and women. Infrastructure अपनी जगह है, लेकिन actually the impact that is being made on the lives of the common men and women, that is more important, and spread the fruits of CPAC to everyone. And we as media need to communicate effectively the fruits of CPAC to you. And you need to start consuming traditional media instead of social media, and start reading Jung in the news, and start watching Geo instead of Twitters and TikToks of the world. With that, I leave you. Thank you.